मेरा नाम है अमार। मेरा इरज एंड वेलकम टू वीक रूट्स। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान करीम स्टार्ट हो गया है और हम किसी भी सॉन्ग पे वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक रमज़ान करीम खत्म नहीं हो जाता। हाँ 30 दिन यानी। हाँ 30 दिन। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो का नाम है माहिरा खान फ्रॉम छत्तीसगढ़ फॉर सिक्योरिंग थर्ड पोजीशन इन NYP फेस्टिवल 2023। तो देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हमारा वीडियो का रिव्यू एंड में देते हैं। बढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात ये ज़मी ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो अमन की राह पर चलो। जब जब दहला विश्व हमारा और जब जब बेमकसद खून बहा, चीन रूस जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। My warm greetings to dignitaries. I am Mahira Khan from Chhattisgarh and I am here to speak on the topic of peace building and reconciliation, ushering in the era of no war. Taking pride in India's history is one of the parch prans given by the Prime Minister in the age of Amrit Kal. And looking back at history, it is a proof that India has always been a harbinger of peace. No war does not mean that we have no reason to fight war. It only means that we give importance to peace by following values of compassion and forgiveness. It was the value of compassion that even after winning the war in Kalinga, Samrat Ashok decided to never wage a war and spend his entire life to preach the message of peace to countries as far as Greece. It was the value of forgiveness that even after the British sent our soldiers to world wars and our farmers to famines, Mahatma Gandhi still chose ahimsa and satyagraha for independence. Taking inspiration from India, Nelson Mandela also chose to forgive the apartheid regime in South Africa. My dear audience, like this year's theme, India for the World, India not only preaches but also practices Vasudhaiva Kutumbakam. In India's G20 presidency, we advocate for a multilateral world in which no one country dominates another country. When China dominated Indo-Pacific, India rushed to help and support ASEAN countries. It acted east. When Sri Lanka needed loans, India was the first to give assurance to IMF. It showed that we believed in neighborhood first. And when Turkey, Syria were hit by deadly earthquakes, India rushed for their aid. It showed our brotherhood. Remember, in 1945, after testing the first atomic bomb, Oppenheimer quoted from Bhagavad Gita, "Now I have become death, the destroyer of worlds." And soon after that, the bombings in Hiroshima and Nagasaki, it was proved that the world does not need a war for peace, but it only needs one war, and that is the war against war itself, exactly what Mahatma Gandhi used to preach. हमें युद्ध के खिलाफ एक वास्तविक युद्ध की जरूरत है. And that's why all of us need to unite for one single cause, our planet Earth. The conflicts in West Asia, Africa, and the constant quest for world dominance between USA and China are doing no good for sustainable and equitable development. And this is worse even in the post-COVID era, something which we cannot afford. And in this circumstance, the world looks at India to find peaceful negotiation and conciliation in the midst of Russian-Ukraine war. As the voice of Global South, we believe that few rich countries which have caused maximum war and pollution in the last century should pay for their mistakes by helping and not holding back technologies from poor countries. I understand that we might be divided by borders, but we believe that our culture, sports, and ideas could unite us. And in this condition,
The world looks at International Solar Alliance for an equitable solution to green energy transition. Our jawar, bajra and ragi are being celebrated as superfoods in world today. And the world looks at Ayush for a healthy lifestyle. My dear audience, when one youth from Naxal-affected area of Abujmar in Chhattisgarh can strive and participate in international football, it inspires so many of us to strive for a home that is free of conflict and full of opportunities and growth. In each of us lies immense ability to solve any internal or external conflicts through peace, passion and compassion. बढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात ये ज़मी ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो, अमन की राह पर चलो. Thank you so much. वाह यार, क्या स्पीच थी यार, कमाल की स्पीच थी. स्पीच तो कमाल की थी यार. हाँ. लड़की कितनी प्यारी थी यार. हाँ. माहिरा खान यार बहुत ही प्यारी थी. बाकी यार स्पीच में उन्होंने अमन के बारे में बात किया, पीस के बारे में बात किया हाँ. और नो वॉर के बारे में बताया भाई कि भाई इंडिया तो हमेशा से यही चाहती है कि कोई वार ना हो और पीस हो. तो यार ये जो है ना बहुत ही बड़ी चीज़ है. बिल्कुल. श्रीलंका की हेल्प की, फिर ये तुर्की की हेल्प की, सब कुछ पता है जो भी भाई इंडिया ने किया है, काम किया है. हाँ. तो बहुत अच्छा लगा. बाकी इनकी स्पीच भी बहुत कमाल की थी और खुद भी बहुत प्यारी है यार माहिरा खान. यार माहिरा खान वाली लड़की पता नहीं क्यों इतनी प्यारी होती है. वैसे ये यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल था. हाँ. ये हमें नहीं पता था पहले कि यार किस चीज़ की बात कर रहे हैं, NYP, तो अभी पता चल गया. बाकी यार बहुत ही कमाल का एक्सेंट भी था इनका और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी कमाल की थी. हाँ. बाकी यार 3rd पोजीशन जीती है तो क्यों ना जीते यार, इतनी कमाल की स्पीच दी है इन्होंने. सही बात है ना? यार. हाँ. और अमन के लिए स्पीच दी है और इन्होंने ये बताया कि भाई हम बॉर्डर से अलग हैं पर जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है और जो टेक्नोलॉजी है उससे हम जो है ना एक हो सकते हैं और दोस्त हो सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो इनका एक एक वर्ड जो था ना बहुत ही इंस्पायरिंग था, अमन पे था, तो बहुत अच्छा लगा. फिर हाँ. गाइस हमारा रिव्यू यहीं तक था. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा. तो अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको वीडियो शो रही होगी ज़रूर देखिएगा. तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पीस.